সংঘবদ্ধ আন্দোলন কৃষকদের সারা বিশ্বের নজর কেড়েছিল। দিল্লি এবং হরিয়ানার কৃষক যে আন্দোলনের গতিমুখ তৈরি করেছিল তার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বাংলার দিকে। এতদিন দেখে দেওয়া হয়েছিল জয় কিষাণ মূলত মোদি বিরোধী মুখ। এবার কি তবে এ রাজ্যে তাদের অবস্থান মমতা বিরোধী হবে? কি বলছেন সংগঠনের সর্বভারতীয় মুখ যোগেন্দ্র যাদব? বাংলাকে বাদ দিয়ে আন্দোলনের পীঠস্থান, এই বাংলাকে বাদ দিয়ে সর্বভারতীয় আন্দোলন কোনোদিন দানা বাঁধেনি, সে কথা মুখ ফুটে বললেন যোগেন্দ্র যাদব। 26th of this month, the farmers movement, the historic farmers movement completes 1 year. On this occasion, Sanyukta Kisan Morcha has called for farmers from all over the country to come and join on the Delhi borders. And on 29th onwards, when the parliament session begins, every day we are going to send 500 farmers to protest outside the parliament. We are here in Bengal organizing a series of Mahapanchayats, gathering the farmers of Bengal, because without Bengal's contribution, how can you have an all India thing? So in this all India protest, we are here to organize, to mobilize farmers from Bengal to join us at Delhi borders, or on the 26th we have a rally and a procession in Kolkata by Sanyukta Kisan Morcha. So we want to invite everyone to join us there. Did you get any response from the state government regarding the minimum supply? We have sent not just a letter, we have sent a draft legislation to the Bengal government saying, if you are serious about MSP, okay, the central government looks after those 23 crops, but what about the remaining 100 crops? That has to be done by someone else. So we have said that the state government should pass a law. Unfortunately, we have had no response so far. We have sent a draft law. We have held meetings on the issue of bhutta, corn purchase. We have held series of meetings last year. I'm very sad to say that on that, while the Trinamool Congress-led government criticizes the centre on all the agricultural issues, and they are absolutely right, while they extend support to the farmers' movement in principle, but when it comes to ensuring price for the farmers, we have not had success. You were giving the statistics like Haryana, there are... जी, बार बार ऐसा हो रहा है, चाहे राजस्थान हो, बंगाल हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, ये या दक्षिण भारत की सरकारें जो हैं, किसान आंदोलन के साथ सहानुभूति तो जता देती हैं, लेकिन जब अपनी जेब में हाथ डाल के किसानों को कुछ देने का सवाल आता है तब वो सहानुभूति दिखाई नहीं देती। और हम बार बार कहते हैं, इस शाब्दिक सहानुभूति का हम क्या करें? मैं तो चाहता हूं कि हर कोई अपना राजनीतिक हित साधे। मैं तो चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भी इससे अपना वोट बैंक बनाए, बस किसानों का काम कर दें, उसके बाद अपना वोट बैंक बनाएं, खाली शब्दों से ना बनाएं। और जो खाली शब्दों से बनाएंगे उनका हम विरोध हर जगह पे करेंगे। ক্যামেরায় কাজল চৌধুরীর সঙ্গে আমি দেব কিশোর, আর আপনি দেখছেন দেশভাবনা।